Good morning, students. Before starting today's session, yes, as usual, our basic rules of accounts. Traditional rules, personal account, debit the receiver, credit the giver. But before that, debtor and creditor relationship is important. Debtor becomes giver, creditor becomes receiver. Real account debit what comes in, credit what goes out, and nominal account debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Modern approach, I said debit balance, liability credit balance, expenses debit balance, income credit balance, and capital account credit balance. So this is our basic rules of accounts. I hope you started partnership properly. Now partnership के हम लोग almost admission और गुडविल वैल्यूएशन इसमें आए हैं. तो आप लोगों को सबसे पहले ये मैं समझा देता हूं कि गुडविल वैल्यूएशन और अपना एडमिशन ये चैप्टर में हमें सबसे पहले समझ के लेना है कि एग्जैक्टली गुडविल की एंट्री क्या होती है. तो मैं आपको पूछना चाहता हूं गुडविल की एंट्री एडमिशन के केस में क्या होती है. जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए एडमिशन के केस में गुडविल की एंट्री क्या होगी. जल्दी से बताइए. ये आपको पता है सबको. सो फटाफट बताइए. यस, एनीवन. एक सेकंड ना, मैं बैकग्राउंड सारे एक टेक्निकल पर्सन कौन है आज. सर जी 1 मिनट के लिए सुनो ना. बैकग्राउंड जो है ना, बैकग्राउंड वो नॉर्मल रोज का ही रहने दो ना. वो बच्चों के कमेंट्स आते हैं उसके ऊपर से फिर. हाँ, वो मत कीजिए. ब्रैकेट में बॉक्स में मत डालिए. वो जैसे पहले का वैसे ही रहने दो. हाँ, हो गया स्टार्ट. यस, वेरी गुड बेटा केशव ठाकुर. न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट. आवाज आ रहा है क्या? देखो. यस, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तिकडे जाताना आठवण करा, तिकडचे दोन्ही आवाज बिघडले. काहीतरी काढा केला कोणीतरी तिकडचे प्लास्टिकचे. काल ऐकत होतो आवाज वेगळा. The balance sheet of A and B as on 1st January 2020 was as follows. क्या? ट्रेड पेएबल. चलो, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3. यस, आज की शुरुआत हम लोग कर देंगे. अभी इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आ जाइए फटाफट. इलस्ट्रेशन 3 इजी रहेगा तो उधर के उधर ही कर लेंगे. नाउ यू नो द टेक्निक और मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा. कुछ क्वेश्चंस हम लोग टाइम लगा के सॉल्व करेंगे जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था. आई ऑलरेडी प्रॉमिस्ड यू that today we are going to start with goodwill valuation and last 2 questions TYKK and admission के almost all question and retirement का थोड़ा बहुत. We are going to start with basics. Okay, so A and B are partners in a firm sharing profit or losses in the ratio of 3:2. The balance sheet of A and B on 1/1/2020 is given below. ट्रेड पेएबल. चलो फटाफट आज फुल एनर्जी चाहिए मुझे. ट्रेड पेएबल, बैंक पूरी, कैपिटल अकाउंट्स A and B, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, प्रोविजन, इन्वेस्टमेंट, कैश. So nothing difficult in this question. C is admitted 1/6 share. Now today you have to give me answers. 1/6 share. So new profit sharing ratio is 3:2:1. He introduced capital of rupees 25,000. Can you tell me? New ratio is given. New ratio is given. What is the meaning? New ratio is given. Yes, so screen is not properly visible. अभी हो गया है बेटा. स्क्रीन फुल करवा दिया है. संगम जी स्क्रीन फुल हो गया क्या देख लीजिए. बॉर्डर है ही क्या?
सर स्क्रीन फुल करवा दीजिए करके कमेंट्स आ रहे हैं, तो इफ पॉसिबल उतना ये आप लोगो साइड में लगवा दीजिए, और वैसे भी मेरे इसमें लोगो होता ही है। टेक्निकल पर्सन जी, बच्चों को विजिबिलिटी के लिए दिक्कत आ रही है मोबाइल पे। हेलो, ओके, नाउ यस यस, थैंक यू। सो नाउ टाइप नंबर 2। यस बेटा, स्क्रीन इज ब्लर अभी हो गया है, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यस सर, हो गया फुल स्क्रीन, थैंक यू। अभी अभी फोकस कीजिए। चलो, नाउ टाइप नंबर 2 इज दैट न्यू रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन। New ratio is given. It means you have to calculate sacrificing ratio. Chalo. So what is the new ratio, beta? 3:2. Write down. फटाफट लिखिए आज वर्किंग नोट 1, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, चलो फटाफट जितने हो सकते उतने सम सॉल्व कर लेंगे। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए वी विल ट्राई टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस। दिस विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, सो प्लीज मेंटेन योर स्पीड बेटा। A, B, C particulars. Old ratio, 3/5, 2/5. New ratio, 3/6, 2/6, 1/6. Make the numerator equal, denominator equal. 18/30, 15/30. This is 12/30, 10/30, and 5/30. Sacrificing ratio, 3/30 giver, 2/30 giver, 5/30 receiver. Working note 2. Okay, goodwill adjustment. Working note 1 is sacrificing ratio. Working note 2 is goodwill adjustment. C is unable to bring in cash his share of goodwill. They decided to calculate goodwill on the basis of C's share profit and capital contribution made by him. So this is called as hidden goodwill. So this concept is called as hidden goodwill. Write down. Hidden goodwill. Now how to calculate this? See beta, goodwill adjustment, hidden goodwill. Now C's share is 1 and his capital is 25,000. His capital is rupees 25,000. Correct है?
His capital is rupees 25,000. Now, total share is 6. So what is the total capital required? Total capital required 1,50,000. Now here, red pen adjustment. Goodwill is equal to, how to calculate total capital required, beta? This is a VOG, cross multiplication. 25,000 into 6 upon 1, cross multiplication. So goodwill is equal to total capital required. This is required, and actual capital of A, B, C. A, B, and C. Total capital required 1,50,000 minus actual capital. Actual capital, beta, 44 plus 36 plus 25. $45,000. Goodwill is equal to total capital required minus actual capital A, B, and C. And 45,000 is the hidden goodwill. So, beta, C's share. This is a total goodwill, na beta, total. So, C share kitna hua? 45,000 into 1 by 6. 45,000 into 1 by 6 is equal to 7,500. Now 7,500 is credited. 7,500 is credited, and A and B will share it in the sacrificing ratio. So what is the sacrificing ratio? 3 by 5, 2 by 5. So 7,500 divided by 5 into 3 is equal to 4,500. Sorry, his capital is debited. My mistake here, and A and B are credited. 4,500 and 3,000. So A capital, B capital credited, and C's capital is debited. Easy goodwill adjustment. Now, what is new concept here? That is hidden goodwill. Remaining part is very easy. Revaluation account and capital account. Only two accounts are asked, beta. But we are going to start with balance sheet. Okay. Yes, beta. Understood hidden goodwill? Goodwill adjustment is very easy. So देखो एकदम हिंदी में एक बार बता देता हूँ. एक चॉकलेट, that's why 25,000. सी ने कितना पैसा लाया? 25,000. टोटल चॉकलेट्स कितने? 6. तो आपका कैपिटल कितना होना चाहिए? 1,50,000. 1,50,000 कैपिटल होना चाहिए, पर आपका कैपिटल है कितना? 44, 36, 25. सो दिस इज एक्चुअल कैपिटल. तो एक्स्ट्रा कैपिटल जो होना चाहिए वो क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो आपका गुडविल है. वो आपका गुडविल है. नाउ क्लियर बेटा, व्हाट इज हिडन गुडविल? एंड दिस इज कॉल्ड एज हिडन गुडविल. दिस इज कॉल्ड एज हिडन गुडविल. ओके, वेरी गुड बेटा. 1,05,000 बेटा बैलेंस शीट से आया ना. ए का 44,000, बी का लक्षिता, बी का 36,000 एंड सी का 25,000. दैट्स व्हाई दिस इज 1,05,000. इट्स वेरी सिंपल. यस.
थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड वर्किंग नोट्स. इफ वर्किंग नोट्स प्रॉपरली समझ में आए तो गुडविल इज नथिंग. ओके, चलो नाउ रिवैल्यूएशन अकाउंट जस्ट बना लो और बाकी का हम लोग उधर के उधर ही बनाएंगे. रिवैल्यूएशन अकाउंट, वर्किंग नोट 3, particulars rupees, revaluation account. Now, furniture is to be written down by 870. तो मैं इधर फर्नीचर के बाजू में 870 माइनस करता हूं. हाँ, आप लोग बनाइए अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट. मैं इधर के इधर ही बना लेता हूं. आई विल राइट इट ओवर हियर. रिवैल्यूएशन अकाउंट टू फर्नीचर, एसेट डाउन, liability increase loss, asset increase, liability decrease gain. To furniture 870. Easy. To inventory reduce ना बेटा. Inventory by 5%. 5% कितना हुआ? 21,400 into 5% is 1070. 1070. Next, a provision is required 5%. Provision required is 5%. 200 already है. So 35,000 into 5%, 1750. Already 200 is there. So extra needed 1550. So this is important, a red pen. To RDD, 5% into 35,000 and already you have 200. Already you have 200. So extra provision is 1550. Next, appreciation up to rupees 29,200. So by building, $3,200. Building is 3,200. Value of investment increased by 450. By investment 450. And trade payable 1,400, which is not to be paid off. Investment को 450 से बढ़ा दो. Inventory is 1070. Building 3,200 से बढ़ा दो. Investment 450. And by trade payable 1,400. 3,200 plus 450 plus 1,400 minus 870 minus 1070 minus 1550. And wages is also there, na? Wages, okay. Liability increase, not balancing figure. To wages 1560. And I think revaluation account is first time tallied. बेटा ये सब सदियों में एक बार होता है. So wages, trade payable minus 1,400 and outstanding wages 1560. So revaluation account is getting tallied. Okay. Now capital account. C brought rupees 25,000. So 25,000 add किया. 25,000 add किया. And Goodwill 7,500
एंड ए और बी में कितना ऐड होगा? 4,500 एंड 3,000. 4,500 and 3,000 is added in. So what is your capital account balance? See, trade payable will be, you can write over there, 17,000 minus 1,400, 15,600. Now you got this technique, beta. 1560. Update your balance sheet. Update your balance sheet. Same thing you have to do it in the final accounts. Bank OD 9,000. Capital account A 48,500. B 39,000. C 25,000 minus 7,500. This is 17,500. Next one, building 29,200. 5,800 minus 870. 4,930. 21,400 minus 1,070. 20,330. 35,000 minus 5%. 33,250. 2,950. And 40,500. One lakh 31, 160 minus 1560, 48,500 minus 39,000. Yes, 131, 160. This is a tally figure. Easy, che? So what is the new concept in this question? What is the new concept, beta? Yes, beta. Goodwill distributed by new partner to old partner. कैसे लिखना है आपको? By seeds capital. See, capital account कैसे बनाओगे? Very simple. Capital account I will show you. Capital account ABC. Buy balance brought down. Buy balance brought down 44,000, 36,000. ABC here. By bank 25,000. Then A credit by 4,500. B credit by 3,000. C debit by 7,500. So by C's capital, goodwill adjustment, and 2A and B here goodwill adjustment. And balancing figure is 2 balance carried down. This is how you have to present your capital account. ICA ने क्या किया चेक करने दो. Same thing. Only they have written separate. I have written directly. And instead of buy balance brought down के सामने कुछ भी नहीं रखने का. Yes. So same presentation. ICA presentation and my presentation are same. Only on one line. Same line you have to write goodwill adjustment. 4,500 for 3,000 and debit में 7,500. A and B. So they have recorded it separately. 4,500 and 3,000. I have recorded combined figure. Got the concept? Easy che? Ekdam. Capital account. Chalo. Move to illustration number 4. So what is new concept here? Hidden goodwill. Yes. So you can write, it is necessary to prepare balance sheet. No beta. This is just for, suppose exam में यदि आता है balance sheet तो hidden goodwill you can write. बेटा रिवैल्यूएशन गलती से टैली हुआ है सूर्य कुमार. ट्रेड रिसीवेबल बेटा 5% से डिक्रीज होगा. 35,000 माइनस 5%, 1750. Fourth question is very easy.
चलो memorandum revaluation is similar to goodwill adjustment. Now illustration number 4. Yes. Dalal Banerjee Malik. Beta, are you getting like this? Should I write whole answer or only working notes? Can you tell me, sir, outstanding wages का क्या हुआ? Outstanding wages लिखा ना बेटा बैलेंस शीट में, रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा एंड बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे लिखा आदित्य. Outstanding wages is given in the question na beta. A provision for outstanding wages of 1560 is given in the question. Outstanding wages का provision. Okay. चलो रिवैल्यूएशन टैली हुआ, इसमें गलती से हुआ है. ओके, ओनली वर्किंग नोट्स. ओके ठीक है, सो आपको वर्किंग नोट्स में करवा के दूंगा एंड रिवैल्यूएशन और वो वही के वही आप लोग बना लोगे. ओके इजी. चलो यस वेरी गुड. सो टैली उधर के उधर कर लेंगे और आफ्टर वर्किंग नोट यू प्लीज स्किप हाफ ऑफ पेज टू ड्रॉ योर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. सो 1/2 पेज छोड़ दीजिए, 1/2 पेज. ओके सो वर्किंग नोट्स, अदरवाइज यू डू वन थिंग, यू राइट ऑल दीज थिंग्स इन रफ पेजेस एंड आफ्टरवर्ड यू कैन फेयर इट. ओके तो फेयर वर्क बाद में कीजिए. वर्किंग नोट्स में लिख के देता हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट यू प्रिपेयर बाय योर ओन. ओके वर्किंग नोट्स आई विल गिव यू. ठीक है. ओके यस. वर्किंग नोट 2 में 1,50,000 कहां से आया बेटा? एनपीओ भी इतना ही सिंपल टॉपिक है वंस यू डू द लॉजिकल वे. मैं एक ही बात बोलता हूं, एनपीओ ऐसा चैप्टर है जो आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग करेगा. बेटा 1,50,000 कहां से आया? स्कूल लेवल पे सिखाते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 25,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 1. स्कूल में नहीं किया क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन? बेसिक मैथ्स है यार ये. कौन पूछ रहा है 1,50,000 कहां से आया? आई वोंट टेल यू द नेम. ऐसा एनर्जी रहने दो. पार्टनरशिप सॉल्व करते टाइम है ना, मुझे ऐसा लगना चाहिए, यू मस्ट हैव सम एनर्जी. यस आई वांट टू डू, आई वांट टू टैली दिस सम. ऐसा एक खुशी होनी चाहिए कि यस आई टैलीड दिस सम. इज रिक्वायर्ड यार. एक पैशनेट रहने दो विदाउट कोहली एटीट्यूड. दो ही इज गेटिंग फेल्यूर. Hidden goodwill is not going to show it in the balance sheet. We have to divide it. It's a total goodwill. And goodwill, we will distribute it. So ये balance sheet में आने का सवाल ही नहीं है. Balance sheet में goodwill कहां से आएगा? Goodwill is not allowed to record in balance sheet now. So your 11-12 faculties, if they are telling you to write goodwill in the balance sheet, is not allowed at all. Because it is self-generated goodwill. It is not purchased goodwill. See, purchase goodwill means what? You are buying some brand. Suppose, for example, if I'm a local trader and I want to buy some brand, it is purchase goodwill. Okay, I'm paying for it. In case of admission, retirement, you are doing your work, beta. Admission, retirement, mein you are generating that goodwill in your own calculation. You are not buying from someone. So it is called as self-generated goodwill. नितल सोनी बोल रही है कि विराट कोहली ने थोड़ा ब्रेक लिया था. बेटा ब्रेक के लिए अपने पास टाइम है तो 6 महीने दे दीजिए.
6 मंथ दे दीजिए, एक ब्रेक ले लीजिए, बड़ा ब्रेक लेके वापस आइए. We cannot afford that break ना बेटा. We do not have any other responsibilities. Okay, at student level, if you are married और आपके ऊपर बहुत सारी responsibilities है, then it's okay. Because I want, suppose if I want to learn further degrees, it's not possible. सर अगर परचेज गुडविल होगी तो वो डालेंगे क्या? हाँ, तो वो बैलेंस शीट में आता है. यस बेटा, अखिल, परचेज गुडविल बैलेंस शीट में आता है. ओके. एनपीओ if you are doing in adless technique, adless, then it's of no use. T format technique, always remember Sanket sir taught you only T formats, not adless. Adless ये 11-12 की फैकल्टीज करवाती है, but CA students are never doing it in the adless format. Suppose if you are doing in adless format, it's okay, but then your basics are not clear. चलो आगे बढ़ते हैं. दलाल बैनर्जी मलिक are partners sharing in 2:1. क्या रेशो है? 2:1, old ratio. Their balance sheet is given below. Trade payable, outstanding liabilities, general reserve, hidden adjustment. Write down. General reserve, always, whenever there is a general reserve, it is hidden adjustment. You have to divide it 6,500 among old ratio. So इसका balance 0 हो जाएगा. And दलाल में write down 6,500, take on calci, divide by 5 into 2 is equal to 2,600, 2,600, 1,300, 1,300, 2,600, 2,600, 1,300. Illustration number 4. 2,600, 2,600 and 1,300. Okay. Mr. Mistry shall bring 5,000 towards capital. Now please tell me, now it's your time. Please tell me it in the comment section. क्या, what is the treatment? Balance sheet में क्या treatment do? What is the treatment in the balance sheet? Yes, tell me fast. Balance sheet में क्या treatment do? Yes, balance sheet में capital account increase, new capital account Mistry 5,000 and cash at bank 5,000. Okay. The value of inventory should be increased by 2,500. Revaluation account main answer hai. So before that, yes, revaluation will do, but before that we have to find out whether we have to calculate sacrificing ratio or not. Yes, general reserve hai. Goodwill is 15,000. This is a total goodwill. Huh? So we have to find out Mistri's share. New profit sharing ratio is 5:3:2. Okay, new ratio is given. Therefore, old is not equal to sacrificing. Old is not equal to sacrificing. New ratio is given. Write down. Given new ratio. So working note 1, sacrificing ratio. Write down. Working note 1, sacrificing ratio. So what is sacrificing ratio? Yes, you find out this sacrificing ratio and tell me. Dalal, Banerjee, Malik, Mistry. Old ratio. 2:1. New ratio. 5:15, 5/15,
3/15, 2/15. Now you only calculate sacrificing ratio. You only calculate sacrificing ratio. Fatafat. Tell me it in the comment section. बैंक में बढ़ा दिया और मिस्त्री कैपिटल लिख दिया. यस, वाग्देवी सिम्हा ने बराबर बताया. यू आर करेक्ट बेटा. चलो 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 फास्ट. चलो फास्ट. What is the sacrificing ratio, beta? Sacrificing ratio is 3, 6/15, 6/15, 3/15. 1/15 giver, 1/15 giver, 0, and 2/15 receiver. 2/15 receiver. 1:1. Working note 2. Goodwill adjustment. Mistri share. Mistri share, beta. Now you only tell me. Mistri share. Yes. Tell me fast. Entry. I want entry. With amount. Mistri share, beta. Okay. No problem, beta Niktal. Two by 15 into 15,000. 2,000. Now this 2,000 beta divided in two parts. किसको किसको मिलेगा? दलाल, बैनर्जी. दलाल को कितना मिलेगा बेटा? 1:1. So 1,000, 1,000. So what is the entry? Dalal credit, Banerjee credit, Mistri debit. Okay. चलो. So effects on question itself. मिस्त्री में से माइनस कर दो 2,000. दलाल में ऐड कर दो 1,000. बैनर्जी में ऐड कर दो 1,000. So goodwill adjustment over. Okay. Easy. Now you are comfortable with this admissions problem, beta. It's not at all difficult now. एकदम easy है. Yes, I know it's easy. Very good. Very good. Yes. Now my students, they are rocking beta. Yes, now they can solve any question. I know that. Yes, एक नंबर स्टूडेंट्स है, सबको समझ में आता है. Those who are very regular in the class, जो रेगुलरली ये अटेंड करते हैं. काई को इतने 15,000 20,000 आपको लगा ना, आप मुझे दे दो ना, पास होने के बाद दो. आपको लगता है कि भाई ये फ्री में भी इतना अच्छा बता रहे सर,
तो आपको लगा कि नहीं भाई हमें कुछ तो देना है, दे दीजिए, मैं अकाउंट नंबर दे दूंगा आपको, सब लोग मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना बाद में पैसा पास होने के बाद। पर अटेंड कीजिए, रेगुलरली होमवर्क कीजिए, बस बाकी कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। आई वॉन्ट बिफोर रिजल्ट मुझे बस इतना दीजिए कि आप रेगुलरली लेक्चर्स को अटेंड कीजिए फेस टू फेस में, मतलब लाइव लेक्चर में, एंड देन बाद में तो क्या, फिर बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो देखते हैं ना, इतनी मजा नहीं आती, यहां पे ज्यादा मजा है। यस, नीड्स प्रैक्टिस तो बेटा करना ही पड़ेगा आदित्य, प्रैक्टिस के बिना क्या होगा। यस, फर्स्ट धोनी का वो सेंटेंस मैं हमेशा याद करवाऊंगा, डोंट एक्सपेक्ट रिजल्ट्स, रिजल्ट्स आर बाय प्रोडक्ट, सेकेंडरी, प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिजल्ट्स जो आते वो आते हैं, बट हमें 100% फोकस करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, यस, रिवैल्यूएशन अकाउंट, लाइव सेशंस आर ऑलवेज बेटर। यस बेटा, जेवा, चलो। द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी शुड बी इंक्रीज बाय 2500। इन्वेंटरी कितने से बढ़ा दी बेटा, इन्वेंटरी कितने से बढ़ा दी, 2500। चलो बढ़ा दो, इन्वेंटरी 2500। व्हाट इज सर्स रूल, एसेट इंक्रीज लाइबिलिटी डिक्रीज क्रेडिट, एसेट डिक्रीज लाइबिलिटी इंक्रीज डेबिट, बाय इन्वेंटरी, बाय इन्वेंटरी हाउ मच, 2500, रिवैल्यूएशन अकाउंट। Furniture depreciated by 10%. Furniture 650. So to furniture 650 over. Reserves for doubtful debts to be provided 10%. To RDD 550 minus. Value of land and building enhanced by 20%. By land and building. $5,000. Goodwill already over, general reserve already over. Outstanding liabilities includes 1,000 due to Mr. Sen. Now this is important. Yes, anyone apply your logic. Outstanding liabilities to Mr. Sen paid by Mr. Dalal. Tell me what is the entry. चलो चलो चलो, चलो, व्हाट इज द एंट्री, कौन बताएगा। वेरी गुड यश गुप्ता, वेरी गुड। My way is only to boost your confidence, to tell you how to present the answer, to tell you how to think on the question. And now you are thinking in the same way. So that's why you are getting tallied figures. Very good. Now only one important line in this. Yes, outstanding liability, who pays it? Dalal. So now outstanding liability is getting reduced, 0. And new liability towards payable to Dalal, because he paid it now. So credit the creditor. So credit the creditor means to Dalal's capital, and outstanding liability is cancelled. Liability has a credit balance. Now give debit to Dalal's capital, pay to Dalal. So Dalal is our creditor. Now हमें किसको pay करना पड़ेगा? We have to pay to Dalal. So Dalal is our creditor, payable. Okay sir, got the concept. So outstanding liability में से मैं कितना माइनस करूंगा? 1500. एंड दलाल में कितना ऐड करूंगा? 1500. ओके, सो गॉट द एंट्री, वहां पे लिख दिया क्या? आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी कैंसल टू दलाल्स कैपिटल. ओके, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज टू दलाल्स कैपिटल.
नो बेटा बेटा, देयर इज एंट्री, सही है माँ, देयर विल बी अ एंट्री। अरे दलाल क्या फोकट में पे कर रहा है क्या? वी हैव टू पे टू दलाल ना। ऐसा कोई भी पार्टनर किसी की लाइबिलिटी क्यों पे करेगा? ही विल टेक इट आफ्टरवर्ड्स। तो सही है माँ जी, गलत एंट्री। नाउ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस, आई थिंक यू आर इन प्रॉफिट 7,500। व्हाट इज द प्रॉफिट बेटा? -650 -550, 6,300। ओल्ड पार्टनर्स, इसका हक है ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स 2:2:1 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, 2520। 2520 इसमें ऐड करेंगे, बैनर्जी में 2520 ऐड करेंगे, मलिक में कितना? 1260, 1260 ऐड करेंगे, करेक्ट है। नाउ कैलकुलेट। ट्रेड पेबल 12,850, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 0, जनरल रिजर्व 0, 1000 प्लस 1500 प्लस 12,000 प्लस 2,600। सो दलाल्स कैपिटल 19,000, वापस एक बार, 12,000 प्लस 1000 प्लस 2,600, लाइबिलिटी कितने की थी? ओ सॉरी, लाइबिलिटीज ऑफ ओनली 1000 है, सॉरी। सो सिर्फ 1000 ही आएगा यहाँ पे, ओनली 1000। लाइबिलिटी टेकन ओवर इज 1000, सो हियर इट इज 500। सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, ओनली 1000 इज रिड्यूस्ड, हाँ बेटा। सो 1000 कर दीजिए। नाउ कैलकुलेट 12,000 प्लस 2,600 प्लस 2520 प्लस 2,000, 19,120। बैनर्जी 12,000 प्लस 2,600 प्लस 1000 प्लस 2520, 18,120। मलिक 7,560, and here Mistri is 3,000, 12,850 plus 500 plus 19,120 plus 18,120 plus 7,560 plus 3,000, 61,150. It's a liability side. Let's check it. 30,000, 6,500 minus 650 कितना आया? 5,850. Then 2,500 plus 11,750 कितना आया? 14,250. 5,500 minus 550, 4,950, 140 and 5,960. 5,960 plus 140 plus 4,950 plus 14,250 plus 5,850 plus 30,000. Yes, 61,150. 61,150. एक मिस्टेक हुआ था, that outstanding liability we have to reduce it by only 1,000. I reduced it by 1,500. Samir Singh is saying, sir, I am correct today. I am very happy. Yes, बेटा, टैली हुआ तो हैप्पी होना ही चाहिए। टैली हुआ तो हैप्पी होना ही चाहिए। यस बेटा, भूमिका रेक्टिफाइड, बेटा रेक्टिफाइड। सर समझ आ गया। आदित्य, यस वेरी गुड। चलो
इलू 6. Hey, sacrificing ratio now you calculate by your own. Huh? I already taught you two yesterday. इलू 5. चलो इलू 5 कर लेते. इलू 5. Sir, solve it 1 to 2 times. Okay. Yes, my friends, solve it 1 to 2 times बेटा. पूरा आ जाएगा. पूरा आ जाएगा. चलो हो गया. बस अभी बाद में देख लीजिए. आई विल शो यू फुल आंसर्स. इलू 1 2 3. इलू 1 2 तो बताया था. 3 4 5. इलू 5 पे आ जाइए. A and B sharing profit sharing ratio in the ratio of 3:2. Solve that illustrations. हाँ बेटा, case 1 case 2 all cases illustration 5 के ऊपर के. They take as a C new partner, calculate new profit sharing ratio. C purchase 110 from A. C old ratio A B C. 3/5 2/5. How to solve this? I already told you. 2/5. New ratio. C has given 1/10. 1/10 he is receiver. And 1/10 he is a giver. So beta, can I write it as 6/10, 4/10, and it's a balancing figure. It's a 5/10, 4/10, and 1/10. So 5:4:1. New ratio is 5:4:1. So 1/10 given, na? This is given. So this is a balancing figure. When he gives it means he sacrificed. So you can write it in the question. He sacrificed. After this, we will take a break. फिर 1:30 तक आगे कंटिन्यू करेंगे सेशन. ओके. Second one, A and B agree to sacrifice 1/10 share to C in the ratio of 2:3. Okay. Now how to solve this? एक ही मिनट ना बेटा, कुछ तो दिक्कत आ रही है.
क्या हुआ? डू वन थिंग, कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। हाँ, हो गया। चलो बताइए मुझे, 1/10 he is getting 1/10. Out of that, how they get it? Yes बेटा, 1/10 कैसे मिला उनको? C को 2:3 रेशियो में 2/5, 3/5. So 2/50 and 3/50. Can I write it as 5/50 beta? 5/50. Okay? 5/50. Now do this 50 beta. ये 50 कर दीजिए। तो 50 करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 30/50, 30/50, 40/50, sorry, 20/50. So 30 minus 2, 28/50, 17/50, and 5/50. 28 is 2, 17 is to 5. 28 is to 17 is to 5. You can check the answer. 28 is to 17 is to 5. You got the answer. So beta, sacrificing is given in the question. So this is again sacrifice. So 1/10 into 2/3 and 1/10 into 3/5. 1/10 into 2/5 and 1/10 into 3/5. And accordingly, you will solve it. Simply gets 1/10 share. So this is type number 1. So remaining, yes, A, B, C, 3/5, 2/5. Simply gets 1/10 share. Remaining 9/10, 9/10 into 3/5, 2/5, 27/50, 18/50, and 5/50. So 5/50, 30/50, 20/50. So sacrificing ratio 3/50 and 2/50. 27 is to 18 is to 5. Very simple. Take a break of 10 minutes. Full recharge हो जाइए. Yes. जल्दी से फुल चार्जिंग करके लाइए खुद को एंड देन वी विल अगेन स्टार्ट. चलो, टेक अ ब्रेक.
इलस्ट्रेशन 6 पे आ जाइए बेटा. A and B are in partnership sharing profit and losses in the proportion of 3/4 and 1/4 respectively. Okay, 3:1. Their balance sheet is given below. So balance sheet देखिए, cash 1,000, receivables that is debtors 25,000, inventory 22,000, plant and machinery 4,000, trade payable 12,000, bank OD 15,000, capital AB 25, 15 plus 25 plus 12. So this is 52. And this is 25 plus 22 plus 4 plus 1, 52. Okay. On 1st April, C admitted. He decided, अच्छा, अभी का ratio, new ratio is given in the question. New ratio is given. What it means, beta? New ratio is given का meaning बताओ, चलो फटाफट. I know you, all of you are knowing the concept. So tell me, new ratio is given. तो इसका meaning क्या होगा? Yes, what is the hidden meaning? 10,000 capital retain, distribute. Type 2, beta, very good. So what is the meaning? Meaning I'm asking you. Meaning, Yashika, I'm asking you meaning. Yashika. If new ratio is given, it means, अरे बताओ जल्दी से. Old is not equal to sacrificing. Plant and machinery reduced by 10%. 400. 500 is to be provided for bad debts. And inventory value plus 2940. It means old is not equal to sacrificing. संजना ने सिर्फ बराबर बताया and Avi Sharma ने बराबर बताया. Exact wordings. Old is not equal to sacrificing. Now this is something new. By bringing in or withdrawing cash of A and B to make the capital proportionate. Now this is new adjustment. So what is new in this? To make proportionate adjustment. Now understand how to calculate. Working note 1. Working note 1. Write down. Sacrificing ratio. Sacrificing ratio. A, B, C. Particulars. Old ratio. Three by 4, 1 by 4. New ratio. 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3. Nine by 12. 3 by 12. Four by 12, 4 by 12, 4 by 12.
Now 5/12 giver, 1/12 receiver, and 4/12 also receiver. Okay. So now this is something new. Now 2 debit, 1 credit. A is credited. Working note 2, goodwill adjustment. Now what is goodwill adjustment, beta? He provided 2,000. C's share for 4 chocolates, 2,000 debit. Now B is also giver. So B share for 1 chocolate, 4 के लिए 2,000, तो 1 के लिए 500. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. चार के लिए 2,000, तो 1 के लिए कितना? It's 500. And H share for 5 chocolates. For 4 chocolates 2,000. तो 1 chocolate को 500 आया, तो 5 chocolates को 2,500 credit. So goodwill adjustment entry, C account debit 2,000, B's account debit 500 to A's capital 2,500. Now next is revaluation account. Working note 3. Now this is goodwill adjustment first time हुआ. Beta, this goodwill adjustment is first time. B debited, old partner debit. Old partner B debit पहली बार हुआ. Old partner B debit पहली बार हुआ. It's first time. Old partner is also debited because he is receiver. Got this concept, beta? Got this concept? B is gaining partner. Yes, beta. B is gaining partner. Very good. Very good. Working note 3. Revaluation account. Now, what is revaluation account, beta, in this question? Plant and machinery reduced, receivable reduced. By inventory 2940 to profit 2040, and A and B will share this profit 3:1.
Okay. And now most important, capital accounts. Now see this concept because they want to make their capital proportionate. Particulars A, B, C. Particulars A, B, C. Okay. So they want to make their capital proportionate to that C in their profit sharing ratio. Now this is very important line. Buy balance brought down. Tell me what is the buy balance brought down amount? 15,000 and 10,000. Okay. 15,000, 10,000. Then C will bring cash. 10,000 plus 2,000. So he brought 12,000 rupees. Then goodwill adjustment. A is credited, B is debited by 500 and C is debited. So by B and C, 2 A's capital. Goodwill adjustment, goodwill adjustment. By revaluation, one 530 and 510. And now, two balance carried down. Now, this is very important. First, C's balance, 10,000. Now, 10,000 is for one chocolate. And they are going to share one chocolate equally. So I will write 1. 10,000, 10,000, 10,000. And now, balancing figure is to cash. So this is the new concept. First, in this question, balancing figure is cash. Balancing figure is cash. $19,030. So this is 9030. This is 10. And this is 12,000. So what is new concept here? First write C, then write A and B. According to them, find out 10,000, 10,000 and balancing figure is cash. So 9030 is a new concept. Cash withdrawn. Yes. Got this concept, beta? Tell me. Are you getting illustration number 6? What is new concept? Proportionate cash withdrawn. So new concept is proportionate cash withdrawn. So, okay. Haji beta. Zeba is saying, sir, now it's understood. Very good. So first you have to write C ka capital. Then according to that, find out A and B ka capital. And cash is a balancing figure. Easy है? चलो जल्दी बोलो. Easy है नहीं है? Ms. Bhargavi is saying, sir, yes, sir, clear and understood. Very good. Other students? अरे चलो बाकी लोग भी बोलो कुछ तो अच्छा लगता है.
See beta, now we have to see A category question. A category question देख लेता हूं एक बार. 7 नंबर Z कैटेगरी है. 9 नंबर A कैटेगरी है. 9th नंबर. नाइन्थ नंबर A कैटेगरी क्वेश्चन. बेटा बोलो ना, आर यू फाइंडिंग इट्स इजी और डिफिकल्ट? बेटा साहिल देखो, देखो कुछ भी नहीं किया हमने. क्या किया? गुडविल का एडजस्टमेंट कंप्लीट किया. मैंने क्या किया? गुडविल का एडजस्टमेंट कंप्लीट किया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डाल दिया, फिर मैंने 10,000 रुपया सी का, पहले किसको क्लोज किया? सी को क्लोज किया. सी का एक चॉकलेट का 10,000 बनता है और उनका फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1:1 है, तो सबका कैपिटल सेम होना चाहिए. अभी वही सपोज एज्यूम करते कि इनका कैपिटल 3:2:1 होता, तो सी का 10,000 आता था, बी का 20,000 आता था एंड ए का 30,000 आता था, एंड बैलेंसिंग फिगर आपकी कैश है. तो ये कैपिटल बनाने के लिए इनको इतना कैश लेके आना पड़ेगा, तो उनका कैपिटल प्रोपोर्शनेट होगा. ओके, यस. नाउ दिस कैपिटल इज इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. इसका मीनिंग होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इक्वल टू कैपिटल शेयरिंग रेशो. तो उनका कैपिटल फ्यूचर में 10-10-10 जो पीएसआर है उसी में दिखेगा. Why not goodwill amount is added in this? बेटा गुडविल क्यों ऐड करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है. सेम एडजस्टमेंट वी आर डूइंग फॉर n नंबर ऑफ टाइम्स. सेम एडजस्टमेंट. Yes, this cash will be not added, beta. Now this cash, see, I will tell you how to tally this question. Yes, now see, cash आपको less करना पड़ेगा. Now this question is technically 9030. See, I will show you the balance sheet now. वो कैश कितना लेके आया था? 12,000. सी का 12,000 दिखेगा. कैश लेके, सॉरी, नाउ न्यू कैपिटल. अभी हम लोग कैपिटल बनाए छे तो उधर ही लिख देते ना. सी का 10,000, ए का 10,000, बी का भी 10,000. देर इज नो डिफरेंस इन बैंक कोडी 15,000 एंड 12,000. सो 30 प्लस 40 42 प्लस 15 57,000. प्लांट एंड मशीनरी 3,600. सिर्फ 57,000 पे टैली हुआ. कैपिटल अकाउंट 10,000 वी प्रिपेयर्ड इट ना. सो 57,000 इज अ न्यू टैलीड फिगर. अरे भाई बहुत इजी है. ओनली सेम एडजस्टमेंट वी हैव टू डू. गुडविल गुडविल गुडविल
revaluation. Only one new important adjustment. Now, what is important in this? Their capital will be proportionate in the proportion of C. तो C का one chocolate है 10,000, तो बाकी दोनों का भी 10,000 because 1:1 is a ratio, and balancing figure is 2 cash, and that balancing figure we are going to deduct from the cash balance, and new cash is 12,000 वो लेके आया, तो वो आपका आएगा, और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिख रहा है ना 10,000, that will be carried to the balance sheet. क्या रे तुम लोग, थोड़ा ऐसा समझो ना, इट्स इजी. नाइन्थ नंबर. Proportion means same distribution, sir. No, not same. In the proportion of profit sharing. Profit जितना है उसी proportion में आपको डिवाइड करना है. 1 chocolate 10,000, 1 chocolate 10,000, 1 chocolate 10,000. 3:2:1 होता तो 30, 20, 10. 4:3:1 होता तो 40,000, 30,000, 10,000. ये कैपिटल प्रोपोर्शनेट होगा. उधर ही नीचे चॉकलेट लिख देने के, कोई बात नहीं. करंट अभी बस ना ठाकुर जी, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो, जो है वो देख लो. करंट अकाउंट थ्रू एडजस्ट करना होगा तो करंट अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करेंगे कैश में. बेटा चैप्टर 1 रुको ना बेटा, मैं करने वाला हूं अपलोड. मैं लाइन बाय लाइन, मुझे रोज का थोड़ा थोड़ा टाइम देके मैं 1-1 घंटे का वीडियो अपलोड कर दूंगा, पर एक साथ किया तो ज्यादा मजा आएगा. ठीक है चलो. ए एंड बी are sharing profit and losses in equally. They brought Mr. A and B as follows. 1/1/2010, they agreed C, one-third partner, to increase their capital base to 1,35,000. C agrees to pay 60,000. Beta, this is hidden goodwill. C, working note 1, calculation of goodwill. Same. C's share for one chocolate, 60,000. Total share for 3 chocolates, one-third na. So out of 3, 1 chocolate is with C, 1,80,000. This is capital required. This is capital required. Now, goodwill is equal to total capital required minus actual capital. 1,80,000 minus 1,35,000. So 180 minus 135. Goodwill is 45,000. Goodwill is 45,000. Now, each share ओल्ड रेशियो दिया है क्या? इक्वली है. सो सीच शेयर
15,000 क्रेडिट, सॉरी डेबिट है ये, डेबिट 7,500 ए, बी 7,500, ए बी क्रेडिट क्रेडिट, एंड they want to make their capital base. So C ने कितना लाया? C. Now I will show you how to prepare capital accounts. हाँ, capital accounts A B C particulars, A B C particulars, buy balance brought down, buy balance brought down 45. Buy bank 60,000, 7,500 and 15,000. Same adjustment by C capital to A and B's capital. And to balance carried down 1,35,000 में से 45,000 they want to keep it as it is. 45 and 135 minus 45. Sorry, 90. So 135 minus 90. C's capital is also 45,000. Their capital is now proportionate. Not proportionate, actually 135 is the total. And for this, you have to withdraw some amount. To bank is a balancing figure here. So here 7,500 and 7,500 to bank. So last entry will be A's capital account debit, B's capital account debit to bank. Their capital is here. Their capital base should not be changed. It is 1,35,000. Total 1,35,000. See. So this is a new concept, capital base. And hidden goodwill is a concept here. Illustration 9 भी समझ में आया? Yes. ILU 10 is very easy. ILU 11 is also very easy. ILU 11 is also very easy. Come to TYK 1. TYK 2 is difficult. TYK 1 is easy. चलो TYK 1 हम लोग सॉल्व करेंगे. बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हमारे, बहुत सारे मैंने आपके ट्राई भी करवा दिए. न्यू कॉन्सेप्ट्स. अरे बेटा, बैंक इज अ बैलेंसिंग फिगर. गवर्निंग कोर 1,35,000 टोटल कैपिटल चाहिए. उसमें से 45,000 ए और बी का था ही. तो सी का कितना रह गया? 1,35,000 माइनस 90,000. तो वो हो गया सी का 45,000. और फिर बैलेंसिंग फिगर अभी 45 आया, तो बैलेंसिंग फिगर टू बैंक आ जाएगा. ऐसे क्या कर रही हो बेटा गौरलीन? इट्स वेरी इजी बेटा.
आप है ना हर प्रॉब्लम की एडजस्टमेंट. नाउ व्हाट इज न्यू एडजस्टमेंट? कैपिटल बेस. कैपिटल बेस मतलब उनका टोटल कैपिटल 135 आना चाहिए और सी के हिसाब से गए कीपिंग हिज कैपिटल बेस तो 180. तो 180 होना चाहिए पर 135 कैपिटल बेस है. तो एक्स्ट्रा पैसा गुडविल का आया. हिडन गुडविल. हिडन गुडविल ऑलरेडी सॉल्व किया था हमने कि 180 सी का बेस रखा तो कितना कैपिटल आना चाहिए एक चॉकलेट के लिए 60,000. तो 3 चॉकलेट से टोटल हमारे पास 1/3 मतलब तो 1,80,000 पर हमारा कैपिटल बेस कितना है 135. तो ऊपर का जो पैसा है दैट इज गुडविल अमाउंट 180 माइनस 135 45,000. उसमें से सी का शेयर 1/3. अभी भी नहीं समझा बेटा गोरलीन? ऐसा थोड़ा सा बेटा इजी बोलने का. सर बैंक इज अ बैलेंसिंग फिगर. यस बेटा खुशदीप कौर. वेरी गुड. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ओनली एडजस्टमेंट ध्यान में लेने पड़ेंगे. ओनली दैट ट्रिकी एडजस्टमेंट. यू कैनॉट सी गुडविल. हिडन गुडविल ऑलरेडी वी आर डन इन द लास्ट इलस्ट्रेशन 3 और 4 में. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड न्यू कॉन्सेप्ट इन एवरी क्वेश्चन. मार्क इट एज आईएमपी. यस हिमांशु करता हूं एक्सप्लेन. चलो. अरे कितने सारे क्वेश्चंस में आज तो पूरी लाइन लगा दी. इतना तो मैंने पहले कौन सा बैच में नहीं लिया था. इतना मुझे मजा आया आपके बैच के साथ. फटाफट सॉल्व करवा रहा हूं. कुछ है ही नहीं. पार्टनरशिप इज वेरी इजी चैप्टर. वंस यू गॉट द गुडविल एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड ट्राई टू विजुअलाइज योर बैलेंस शीट. उधर के उधर टैली करो ना यार. बैलेंस शीट खत्म. पूरे इंडिया को डिफिकल्ट जाने दो. पर संकेत सर के स्टूडेंट बोलेंगे नहीं इट्स वेरी इजी. इट्स इजी. इट्स इजी. द फॉलोइंग बैलेंस शीट ए बी सी who are equal partners 1:1:1. D is in partnership and give 1/4 share. Now see, I think old ratio, new ratio is not given. Okay. The values of assets and liabilities other than cash cannot be altered. So beta, what is the meaning for this? Memorandum revaluation account. Chalo. Memorandum revaluation account. Correct है? Okay. Now, old ratio is equal to sacrificing. Why? New ratio, write down, is not given. New ratio is not given. चलो आज टैली करके रखेंगे इधर के इधर. नाउ यू ओनली टेल मी व्हाट इज द वर्किंग नोट 1. चलो 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 फास्ट. टेल मी व्हाट इज द वर्किंग नोट 1. नाउ हियर whether there is need to calculate sacrificing ratio. No sir, there is no need to calculate. Sacrificing ratio. Okay. वेरी गुड. नाउ वर्किंग नोट 1. वेरी गुड. केशव ठाकुर बोल रहा है वर्किंग नोट 1. नाउ आई वोंट हेल्प यू. नाउ यू आर ओनली टेलिंग मी गुडविल एडजस्टमेंट डायरेक्टली. नाउ टेल मी व्हाट इज गुडविल एडजस्टमेंट. D bring 6,000 for goodwill and 10,000 for capital. So he brought 16,000 and cash में मैं ऐड कर देगा 16,000. So cash में ऐड करो 16,000. हाँ. Now what is the goodwill adjustment? चलो tell me. Goodwill adjustment working note 1. Very good. New ratio is not given. Very good. Now you can identify. अरे वाह मेरे दिल्ली के शेर सब लोग एक नंबर है.
सबने बराबर लिखा. नो वन आंसर कि सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि सबको पता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ऑफ नो नीड. व्हाई देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो? अरे यार, न्यू रेशियो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो ओल्ड इज इक्वल टू सैक्रिफाइस. एक नंबर. चलो, यस, वेरी गुड, वेरी गुड. सर 6,000 डी अकाउंट डेबिट and we will divide it in A, B, C. 1/3, 1/3, 1/3, because sacrificing ratio is 2,000 credit. Chalo, so 1:1 1. So minus 6,000 plus 2,000 plus 2,000 plus 2,000. Half of the goodwill is withdrawn by old partners. So half of the goodwill is withdrawn by old partners. Tell me, क्या करूं? क्या करूं? Tell me. Yes, tell me the treatment. Tell me the treatment. कहां से? बैलेंस शीट पे tell me the treatment. क्या करूं बेटा बैलेंस शीट में से? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा. नहीं, केशव ठाकुर, अमाउंट इज रॉन्ग. 3,000 3,000 3,000 की टोटल 9,000 होती है कि नहीं बेटा? सो 2 2 2 डिवाइड तो करते आना चाहिए बेटा. केशव ठाकुर, जोश में मत आइए. यस, 3,000 माइनस फ्रॉम कैश. हिमांशु पाठक, एक नंबर बेटा. 3,000 डिडक्टेड फ्रॉम कैश and 1,000 from A, 1,000 B, 1,000 from C. Very good beta, very good. So cash में से minus, cash reduced, capital reduced. Stock and furniture to be depreciated by 10%. चलो, working note 2. Memorandum revaluation. Now I want answer from your side. Acha, you want ICI presentation or Sanket sir presentation? 2 times old ratio, new ratio, या directly sacrificing ratio? Tell me it in comment section. Old ratio, new ratio अलग अलग करके करना है या directly sacrificing ratio? चलो, answer it fast. Stock and furniture. Stock 12,000 का 1,200. To furniture 500. Now see, this is a new adjustment. Directly. A liability 1,300 created against bill discounted. Now understand this. You have given bill discounted to someone. Bill discounted मतलब बैंक टू बैंक का जो डिस्काउंट करके लाया था बिल. Okay, so that bill discounted, but now you think drawee is not going to pay to bank, and therefore now you think कि drawee ने नहीं पेमेंट किया तो you have to pay. You have to pay. So this is important. So it's my liability. Liability increased to provision for bill discounted. To provision for bill discounted. Again, you discounted bill. This is drawer, drawee, drawee, drawer. You discounted it with the bank. But you think on due date बैंक को ये पेमेंट नहीं करेगा, तो you have to pay to bank on due date. So बैंक को आप पे करोगे. So it's your liability. हिमांशु, समझ में आया क्या आपको? So बिल डिस्काउंटेड के अगेंस्ट लाइबिलिटी क्रिएट किया. लाइबिलिटी क्रिएट करना मतलब 1,300. The building is to be revalued at 40,000. 15,000 से बढ़ा दिया. Buy building. So what is profit? 15,000
माइनस 1200 माइनस 500 माइनस यस 12,000. हम्म 12,000. So now memorandum revaluation profit is 12,000. Now what is the share? One-fourth share. $3,000 debited to D and 1,000, 1,000, 1,000. See, full, this is like goodwill adjustment. Now this is like goodwill adjustment. 12,000 is a total profit. Out of this, D share is one-fourth. Okay. So 1,000, 1,000, 1,000 minus 3,000. Now bills payable 3,000, 6,000. Now capital account 20 plus 2, 22, because minus 1 plus 1 gets nullified. 15 plus 2, 17,000. 10 plus 2, 12,000. $67,000. $12,500 plus 25 plus 1. Your balance sheet tallies at 67,000. You can check the answer. Your balance sheet tallies at 67,000. Yes. So 67,000 balance sheet tallies. So there are only two working notes. Working note 1 and working note 2 is memorandum revaluation. So what is new in this concept? Working note 1 and working note 2. अरे एक नंबर बच्चों, आप पूरा समझ लेते हो. शेर हो मेरे शेर सभी. बरकतुल्ला बोल रहा है सर, आई डन इट ड्यू टू यूर अमेजिंग टीचिंग स्टाइल. थैंक यू बेटा. वेरी गुड. अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है क्या? एटलीस्ट नाउ यू हैव कॉन्फिडेंस दैट आई कैन राइट गुडविल एडजस्टमेंट्स वर्किंग नोट्स एंड आई विल डू इट. यस, शशांक बोल रहा है पूरा समझ में आया. फोर्थ पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन कीजिए. फोर्थ पॉइंट कुछ है नहीं बेटा. बिल डिस्काउंटेड जो था, अभी क्या हुआ था, ड्रॉवर ने बिल डिस्काउंट करके लाया. अभी बिल डिस्काउंट करके लाने के बाद 2-3 महीने के बाद बैंक को कौन पे करेगा? तो ड्रॉवी पे करेगा. पर ड्रॉवी निकलेगा गद्दार. ड्रॉवी निकलेगा गद्दार, तो बैंक को किसको पे करना पड़ेगा? ड्रॉवर को. तो ड्रॉवर को ये ध्यान में आ चुका है. ड्रॉवर को ये ध्यान में आ चुका है कि भाई हम लोग पेमेंट नहीं करेंगे, तो सॉरी ड्रॉवी पेमेंट नहीं करेगा. तो ड्रॉवर ने बोल दिया कि चलो मेरे जेब से 1,300 रुपए जाने वाले हैं, तो मैं अब भी उसकी प्रोविजन करके रखता हूं. तो अब भी उसकी प्रोविजन करके रखता हूं क्योंकि ड्रॉवी ये बाद में धोखा देने वाला है. सो अर्शदीप, आपको समझ में आया होगा, ऐसे में एज्यूम करता हूं. मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट दिखा दीजिए सर. दिखाइए. यस बेटा, व्हाई नॉट. मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन आप ही के लिए तो है. मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 12,000 आया. ओके, चलो चलो, छोड़ना तो नहीं है. अभी भी आधा घंटा, जब तक है जान में सिखाता रहेगा आपको.
यस, आधा घंटा मैं और लूंगा, और आप भी जब तक जाने तब तक मुझे सुनते रहोगे। एक प्लस कैटेगरी क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ए प्लस कैटेगरी। गोपाल गोविंद आर पार्टनर्स। देखो आज मुझे एक्चुअली रिटायरमेंट चालू करना चाहिए था, पर अभी होगा ये कि मुझे एक सेशन एक्स्ट्रा लगेगा डेथ के लिए। ओके, क्योंकि डेथ और रिटायरमेंट के क्वेश्चंस डिफिकल्ट है, पर मैं कोई गड़बड़ाहट नहीं करूंगा। कल का सेशन है, मैं मैम को मांग के लूंगा एक सेशन सिर्फ आपके लिए। ओके, कि बस मेरे स्टूडेंट्स को अच्छे से पार्टनरशिप पे ग्रिप आ जाए। पर एक चीज मुझे प्रॉमिस करना, आज यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 पूरा फेयर में राइटिंग होगा, पूरा फेयर में। आई वॉन्ट एवरी वन, you have to write it in fair, okay? No one, because partnership मुझे पता है in Pune branch I am taking it for more than 15 days. यहाँ पे मुझे 7 दिन में कंप्लीट करना है, so it's my target। मुझे आपको देखो, only to take class is not my aim। मैं तो 2 दिन में खत्म कर देगा, only important adjustment। Ultimately my aim is that every one of you can solve these questions by your own, then it is a feedback for good future। Okay, if you can solve it independently, then I will be a winner। Okay, so just to explain it, it's of no use। तो दुआ करता हूं आप सब बच्चे मेरा उंगली छोड़ के भागने की कोशिश करोगे। नाउ इट्स योर टाइम। सो इलू चैप्टर 1 का, सॉरी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ऑल इलस्ट्रेशंस यू हैव टू फिनिश बाय योर ओन इन फेयर। इन फेयर, ये मुझे प्रॉमिस चाहिए सबसे। यस, वेरी गुड बेटा। Sir, I am too much involved in this chapter, sir, Bhargavi, because in yesterday's night when I am sleeping, I am telling goodwill, debit, credit, admission, death, extra. My sister was shocked by my conversation. Very good, beta. Yes. चलो, yes बेटा, साक्षी टाइम परमिट्स मैं आपका सॉल्व कर देता हूं क्वेरी। गोपाल एंड गोविंद आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 60:40। The firm's balance sheet is given below। Capital 60:40 मतलब बेटा you can write it in the simple way 3:2। Due to financial difficulties, they admitted Guru in the business। अब ये Guru will paid 40% of the profits। Okay, 40% of the profits। So now new profit sharing ratio is also given। It means old is not equal to sacrificing। By looking into question, you can answer it now। Old is not equal to sacrificing। See beta, Guru will bring in cash rupees 1 lakh as capital। So capital जो लाएगा वो retain, not distribute। And now goodwill we have to calculate। So goodwill of the firm will be valued at 2 years of purchase। 2 years of purchase into average of normal average profit। Beta, normal average profit is the correct word। So average profit of 3 years। Average profit of 3 years, but normal average। Guru will bring this in cash। So whatever the amount of goodwill you will calculate, that goodwill each share he will bring in cash। It was also decided that partner will not withdraw their share of goodwill, nor goodwill will appear in the books। तो वो तो हमें पता है, goodwill हम लोग कभी बुक्स में अभी रखते ही नहीं है। ओके, for the profits of the previous 3 years were as follows। Okay, for the year ended 31st March 2018, profit rupees 20,000। Profits of the previous 3 years are given below।
For the year ended 31st March 2018, profit 20,000. But it includes insurance claim received. Beta, insurance claim received is abnormal gain. And abnormal gain you are not going to receive every time. So this is minus. So now 20,000 minus 40,000. So your loss is rupees 20,000. Your loss is rupees 20,000. For the year ended 31st March 2019, loss 80,000. Voluntary retirement compensation paid. Beta, voluntary retirement compensation. It means this is not every year loss. So you pay to your employees, those who want to retire voluntarily, you will pay extra compensation. तो उनको extra compensation आप pay करोगे. तो every year नहीं आने वाला. तो ये abnormal loss है. ये every year नहीं आएगा. So 80,000 को 1,10,000 से बढ़ा देंगे तो profit will be 30,000. And 1,05,000 includes 25,000 profit on sale of asset. तो profit on sale of asset आप every year तो नहीं बेचोगे. So 1,05,000 में से जाएगा 25,000. So this is also abnormal gain. और ये आप माइनस कर दोगे 80,000. ओके, करेक्ट है. सो व्हाट इज न्यू इन दिस क्वेश्चन? हाँ, don't use weighted average concept here, beta. So here 5 7s are 7 is to 5 is to 8. 7 is to 5 is to 8. And here it is 3 is to 2. So beta, what is your goodwill calculation? Average 30 plus 80 minus 20 divided by 3. 90,000 का 30,000 is the average and 60,000 goodwill. So your goodwill calculation is 60,000. So what is new in this question? Now sacrificing ratio वो आप solve कर लेना खुद से. Yes. आप check करना. This is now very easy question. First working note, sacrificing ratio and goodwill calculation. So total goodwill we have calculated. Average profit. So this is your presentation. You can take a screenshot. Insurance claim received. You deducted it. Average profit is 30,000. So goodwill calculation is 60,000. Yes, screenshot ले लिया. 3 is to 2, 7 is to 5 is to 8. And sacrificing ratio is 25, 15, 40. So 25 is to 15 means 3 is to 2. 3 is to 2. No, 5 is to 3. Sorry. Sacrificing ratio is 5 is to 3. Goodwill 60,000 into his share. His share is 40%. So 24,000. So Guru will get 24,000. He will bring 24,000 and credit. चलो जल्दी से. Evaluation account you can do by your own, and partners capital account. This is partners capital account. Very easy question. And balance sheet. Nothing is difficult.
बैलेंस शीट इज गिवन एंड जर्नल एंट्रीज यू कैन डू बाय योर ओन। ठीक है, चलो इजी है बेटा। नाउ आई नो यू आर हंग्री बेटा, बट थोड़े से पेशेंस रखो, थोड़े से पेशेंस। इतना अच्छे से किया है ये चैप्टर। एडमिशन का इंडेक्स दिखा दो। ठीक है बेटा, आपके लिए कुछ भी इंडेक्स दिखा देता हूं आपको। सर लोन एंड एडवांस वैसे ही कंटिन्यूएशन में होगा। लोन एंड एडवांस आप लोग वैसे ही कंटिन्यूएशन में रखोगे बैलेंस शीट में। चलो पार्टनरशिप का इंडेक्स देखने की इच्छा है। आई नो बेटा यू आर फ्रॉम वेरियस सिटीज एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट। फेस टू फेस में आके तो सर की डांट खाना अच्छा लगता है, बट फिर भी खुद पे कंट्रोल करना इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट जब हम लोग बाकी स्टूडेंट्स को देखते अदर देन सीए स्टूडेंट्स। बट अल्टीमेटली आफ्टर 5 to 6 years आपका जो लाइफ है उनसे वो बहुत अलग रहेगा। ओनली यू टू वर्क हार्ड फॉर दिस 5 6 years एंड यू विल गेट एक रिस्पेक्टेड लाइफ इन इंडिया। जो मिलेगा ना आपको वो बहुत अलग लेवल का होगा। सो डू इट नॉट ओनली फॉर यूर सेल्फ बट फॉर यूर फ्यूचर फैमिली, फॉर यूर पेरेंट। प्लीज डू इट। आई नो आप लोग 10 घंटे से ऊपर पढ़ाई करते हो, समहाउ ये टेंशन क्रिएट होते हैं कि सर बस हो गया अभी, बार बार वही स्टडी वही सब कुछ। पर बेटा रूटीन अपना वही है, हम लोग भी उसी में से जाते। मैं मेरे बेटे को हार्डली कल महीने भर के बाद 30 40 मिनट्स मैंने उसको दिए, वो भी उसकी मॉम टैक्स ऑडिट को गई थी, तो मुझे उसको सुलाने के पहले मैं भी क्या लाइफ जी रहा हूं। पर अल्टीमेटली बेटा एक जो रिस्पेक्ट इन फ्यूचर, और जो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से थे और वो आगे जाके बढ़ाना ये बहुत जरूरी है। और आप अब भी मेहनत करोगे, आपकी फ्यूचर एकदम अच्छी होने वाली है। सो डू इट फॉर योर ओन। ओके, ये मत सोचो बैक ऑफ द माइंड, ये सोचते रहो मुझे तोड़ना है खुद को। आज मैं 12 घंटे पढ़ाई करूंगा, आज मैं 16 घंटे पढ़ाई करूंगा, खुद को तोड़ना पड़ेगा। अदर अट्रैक्शन उससे दूर हो जाए। पहली चीज तो ये ध्यान में रखिए। आप बेस्ट कोर्स कर रहे हो और वो भी लॉजिकल वे में करोगे ना जिंदगी में। ये सीए कोर्स मतलब कोई बहुत डिफिकल्ट कोर्स नहीं है। आई एम टेलिंग यू, आई एम ऑल्सो एवरेज स्टूडेंट, नॉट अ मेरिट रैंकर। हाँ होशियार था मतलब क्या कि मेरा बेसिक ग्रास्पिंग अच्छा था, बट ऐसा नहीं था कि मैं बहुत पढ़ाई करता था। बट नाउ कॉम्पिटिशन लेवल इंक्रीज्ड है तो है, और वी हैव टू सर्वाइव इन दिस कॉम्पिटिशन। चलिए ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट्स, ले लीजिए ए कैटेगरी क्वेश्चंस। But today you do retirement questions by your own, similar adjustments. 6, 7, 8, 9. You can see my efforts for these chapters, for your concept clarity, कि मैंने भी कितने efforts लिए for doing this index and all this. Beta, this is not one day work. This is almost I'm working from last 11 years, and that's why it pays me off.
नो बेटा 1300 लाइबिलिटी कैसे दिखेगा? इट्स अ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट. यदि ये नॉर्मल रिवैल्यूएशन होता तो दिखता था पूजा कुमारी. सो वी कैनॉट शो दैट 1300 bill discounted liability because that is memorandum revaluation account. So this is memorandum revaluation. B category. TYK1 is B category. ठीक है बेटा. टुडे यस आई विल शो यू यूनिट 2 का भी इंडेक्स बता देता हूं. That TYK2 questions now I can't solve those questions बेटा. TYK 2 बाकी थे. You take a screenshot of unit chapter 2 का भी यूनिट 2 का स्क्रीनशॉट बी कैटेगरी 10 नंबर. इलेवन नंबर A+ कैटेगरी है बेटा. प्लीज डू दिस क्वेश्चन. प्लीज डू दिस क्वेश्चन. This is very important question. TY ILU 11 of unit 2. You can take a screenshot. I will explain it. फटाफट. Sacrificing ratio, weighted average method is there. Weighted average method, so year-wise profit you have to calculate, and then goodwill adjustment. Test your knowledge भी ले लीजिए. Gaining losing ratio, clever dull wise. Okay, last 5 to 10 minutes beta. Just want to clear your concepts. एक ही क्वेश्चन है A+ कैटेगरी. This is difficult question, that's why I want to take it. इतना लिया है तो ऐसा बुरा लगेगा कि यही एग्जाम में आ गया तो. ओके, सो ILU 11 प्लीज अंडरस्टैंड. यूनिट 2 लास्ट इलस्ट्रेशन है आज का लास्ट इलस्ट्रेशन. प्रॉमिस. CU and AU were partnership sharing losses 5-3. On 1st April 2020, they decided to admit AG. कहां से लाते नाम ये? AG will bring 2 lakhs as capital and 1/4 share into the business. So 5-3 and new profit sharing ratio is given. So what you are going to write over here? Old ratio is not equal to sacrificing. Old ratio is not equal to sacrificing. CU was entitled to salary 2,000 per month. Now this is 1st April 2020. CU, it was revised to 3,000 per month from October 18. Okay, so salary. Interest on capital 8%. Capital 4 lakhs, 3 lakhs, which has unaltered. Goodwill was valued on 3 years of purchase of average. Weighted average profit. The profits for previous 4 years before charging interest and salary.
Okay. So we have to deduct salary and interest from this year wise. So see, here only I will deduct salary. चलो सैलरी बताओ मुझे. नाउ 17 2016-17 मीन्स बेटा सैलरी माइनस करना है हमें. ओके कितना सैलरी माइनस करेंगे? 24,000 in this year. 2,000. When it is increased beta? When it is increased 1st October 18. 18 means 18-19. कौन से ईयर से इंक्रीज हुआ? 2018-19. So again 24,000 बराबर है. So 18-19 में 2,000 for 6 months and 3,000 for 6 months. So 12,000 plus 18,000 30,000 लिखू. And 19-20 बेटा 36,000. So salary 16-17 में 24,000, 17-18 में 24,000, 18-19 में 56,000, 30,000 and 36,000. Next one, interest on capital. Interest on capital 4 लाख 3 लाख 7 लाख 7 लाख पे 8%, 56,000. So interest on capital 56,000. A machine costing 40,000 purchased on 1st October 18. 18 means 18-19 was wrongly charged to revenue account. Okay. So 18-19 का 40,000 से एक्सपेंडिचर में बढ़ा देगा मशीन का. So now expenditure reduced. Okay. Therefore now increase your profit. But 40,000 पे depreciation 20%. अभी 20% 18-19 में 6 months and 19-20 में फुल ईयर. सो 18-19 में 40,000 के साथ साथ 2,000 रिड्यूस होगा. सो 38,000 और उसके ऊपर 20%. 38,000 इंटू 20%. ये पूरा आएगा 18-19 में पूरा आएगा. एंड इधर कितना आएगा? 38,000 पे 20%. तो 7,600 से मेरा प्रॉफिट डिप्रिसिएट रिडक्शन होगा. सॉरी 30,000 एक सेकंड ना. हाँ सॉरी 10%. 4,000 सॉरी ये मैं पेंसिल से लिखो. सो 40,000 पे 10% and 36,000 पे 20%. Stock overvalued of rupees 20,000. 31st March 18 का स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ 20,000. ओवर वैल्यूड मीन्स प्रॉफिट एक्स्ट्रा बताया. सो नाउ रिड्यूस्ड एंड इन नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखेगा. सो एक्सपेंडिचर मोर. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक दोनों भी रिड्यूस होना है. सो ओवर वैल्यूड मीन्स 20,000 एक्स्ट्रा. So now you have to reduce your profit. So by reduction in the profit by 20,000 and upward revaluation by 20,000. There was a loss by fire 10,000 in 16-17. So 16-17 में which was not considered in the trading account. Trading account चा credit ला. Credit means income gain.
So 10,000 profit will get increased, 10,000. And 31st March 2020, bad debts rupees 5,800. So bad debts we have to provide for 5,800. Now you can calculate your profits. Take on calci. Profits 210 minus 24 minus 56 plus 10. So here it is 1,40,000. 260 minus 24 minus 56 minus 20, 160. 210 minus 30 minus 56 plus 36 plus 20, 180. And 305 minus 36 minus 56 minus 7.2 minus 5.8, 2 lakhs. So this is increasing trend. Now this is rectified profit. Now you can do a weighted average profit, and from weighted average profit you can calculate now using sacrificing. So what is new concept over here? What you have to deduct and what you have to add due to salary, interest on capital and year wise calculation. So year wise calculation करना इसमें important था. Why year wise calculation is important? Because weighted average profit. ईयर वाइज कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट. सिंपल एवरेज होता तो ईयर वाइज कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी. सो ईयर वाइज प्रॉफिट्स आर इंपॉर्टेंट. यस बेटा, ऐसा लगता है ना एक भी क्वेश्चन ना छोड़ो. लॉस बाय फायर ऐड क्यों किया? यस, गुड क्वेश्चन. लॉस बाय फायर की एंट्री क्या होगी बेटा? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. सो P&L के वजह से प्रॉफिट माइनस होगा, पर ट्रेडिंग क्रेडिट. क्रेडिट मींस इनकम, इनकम मींस आपका प्रॉफिट ऐड होगा. क्रेडिट मींस इनकम, सो प्रॉफिट ऐड होगा एंड दैट्स व्हाई इट इज एडेड. ओके, सो लॉस बाय फायर इज नॉट कंसिडर इन ट्रेडिंग. ट्रेडिंग को क्रेडिट करना है एंड क्रेडिट मतलब इनकम, इनकम करना है इसलिए. यस, करेक्ट है बेटा. बेटा विदाउट वेट कैलकुलेशन हो ही नहीं सकता. बरकतुल्ला जी, विदाउट वेट कैलकुलेशन हो ही नहीं सकता. ओके, रेम्यूनरेशन एवरेज प्रॉफिट में से क्यों डिडक्ट होगा? तो बेटा एवरेज प्रॉफिट में से इलू 10 में डिडक्ट होगा. इलू 10 में, बिकॉज एवरी ईयर में से माइनस करना. नाउ हियर सी द कॉन्सेप्ट. एवरी ईयर यू विल डिडक्ट दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल and instead of that you directly deduct from the average profit. When you can directly deduct it when it is average profit. weighted average में तो year wise deduct करना पड़ेगा. ध्यान दीजिए, सिंपल एवरेज होता तो आपने एवरेज निकाल के 56,000 माइनस किया रहता तो भी करेक्ट था, बट वेटेड एवरेज में ईयर वाइज माइनस करना पड़ेगा. सो सिंपल एवरेज का क्वेश्चन ऊपर था. सी हियर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डायरेक्टली डिडक्टेड फ्रॉम द एवरेज. ईयर वाइज डिडक्ट करके वापस एवरेज निकालो. वन ऑप्शन इज दैट ईयर वाइज करके वापस डिडक्ट करो. सो इंस्टेड ऑफ दैट डायरेक्ट एवरेज माइनस करो. सो दैट इज बेटर. ओके, सो दैट इज बेटर. सैलरी हमने डायरेक्टली माइनस किया बिकॉज इलू 11 is weighted average profit, so year wise deduction, and ILU 10 is simple average profit, so not year wise deduction, one stroke deduction. Okay, year wise किया तो भी चलेगा, but it is a lengthy procedure. So आप year wise minus करोगे and again you are taking divide by 4, so instead of that directly minus करना भाई, directly minus कर. In which method? Simple average. Weighted average में no option, year wise ही जाना पड़ेगा, year wise ही जाना पड़ेगा. ओवर वैल्यूड. ओवर वैल्यू मतलब 20,000 को एक्स्ट्रा दिखाना. ओवर वैल्यू मतलब आपने एक्स्ट्रा 20,000 दिखाया.
overvalued. So now you and closing stock overvalued means your credit side is more, and credit side is more मतलब income more. After rectification minus होगा रे, after rectification minus होगा, after rectification minus होगा. Good question. एंड नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक इज ओवरवैल्यूड. ओपनिंग स्टॉक ओवरवैल्यूड मींस डेबिट साइड ज्यादा, डेबिट साइड ज्यादा मतलब लॉस ज्यादा, तो अभी प्रॉफिट में लाएंगे. सो प्रॉफिट है इसलिए ऐड किया. नेक्स्ट ईयर सो क्लोजिंग स्टॉक ओवरवैल्यूड मतलब लास्ट ईयर का कम करोगे. अंडर वैल्यूड होता तो लास्ट ईयर का कम करोगे, करंट ईयर का माइनस करोगे. ओके, ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यूड. लास्ट ईयर का बढ़ा दोगे प्रॉफिट, अंडर वैल्यूड होगा तो, और ओवर वैल्यूड होगा तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कम कर दोगे. इट इज अ कॉन्सेप्ट. स्टिल एनी डाउट बेटा? स्टिल डाउट्स? एडजस्टमेंट 1 बेटा, कॉस्टिंग 40, देखो 40,000 की मैंने एसेट ली. 40,000 की एसेट कब ली? 1 अक्टूबर को. तो उसके ऊपर 6 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा. 6 महीने का डिप्रिसिएशन मतलब कितना? 4,000. 10%, 20% टोटल है तो 10% इसमें आएगा. एंड 36,000 इस पे पूरे साल का लगेगा. ये 10% बिकॉज 6 मंथ्स का था और ये 12 मंथ्स, इसलिए 7,200. सो 4,000 का डिप्रिसिएशन माइनस करना है, 7,200 का डिप्रिसिएशन माइनस करना है अलग अलग ईयर से. एंड 40,000 मैंने एक्सपेंडिचर बता दिया था, वो थी एसेट. एक्सपेंडिचर बता दिया, एसेट थी, तो मैं एक्सपेंडिचर अभी कम करूंगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा. सो 40,000 से प्रॉफिट बढ़ेगा एंड डेप्रिसिएशन के वजह से प्रॉफिट घटेगा. सो 40,000 से प्रॉफिट बढ़ाना है और 4,000 और 7,200 से प्रॉफिट कम करना है. ओके, सही है मां जी? ठीक है, धन्यवाद. टुमारो रिटायरमेंट टॉपिक. 2 days we have for retirement and death, but I don't want to start death on Monday. Monday we will start with fresh chapter, that is company accounts, and I will demand 2 more days. तो वो हम लोग देखते हैं, स्केड्यूल में मैम से बात करूंगा and accordingly I will explain you. 1:30 तक मैं सेशन ले रहा हूं and that's why it's easy for me to finish the syllabus. And my dear students, thanks to you, you also have patience. Today I'm very happy. Every one of you answered correctly. Those who are watching my sessions regularly. And आपने बहुत अच्छे से ये समझ लिया. एंड एक हर टीचर को जब वो एक्सप्लेन करता है और सामने वाला फटाफट आंसर देता है तो उससे ज्यादा बेहतर चीज कोई नहीं रहता है फॉर ट्रू टीचर. थैंक यू बेटा. वी विल मीट डे आफ्टर, सॉरी टुमारो. कल हम लोग वापस मिलेंगे और कल हम लोग रिटायरमेंट करेंगे और उसके बाद देखते हैं स्केड्यूल कैसे एडजस्ट होता है. थैंक यू. कल मिलते हैं. थैंक यू. ट्राई टू सॉल्व रिटायरमेंट क्वेश्चंस.